अब यह है कि कस्टम बेस इमेज बिल्ड करने के बाद हम अपनी जो सर्विसेज हैं उनको डिप्लॉय करते हैं। इस मकसद के लिए हम सबसे पहले डेटाबेस सर्वर्स को की डॉकर फाइल प्रिपेयर करते हैं और हम MariaDB जो सर्वर है उसका पैकेज इंस्टॉल करेंगे और फिर हम MariaDB के लिए एक जो ना इमेज बिल्ड करेंगे और उसके कुछ कंटेनर की स्पेसिफिकेशंस राइट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि MariaDB हमारा बेसिकली जो ना वो प्राइवेट नेटवर्क के साथ जो ना वो कनेक्टेड है, जो कि वेब सर्विसेज के लिए डेटाबेस की सर्विस जो ना वो प्रोवाइड करेगा। तो आइए हम MariaDB का जो ना वो इमेज पहले राइट करते हैं। इस मकसद के लिए हमें बुनियादी तौर पे जो स्टेप्स जो ना रिक्वायर्ड होंगे, एक तो ये है कि हमें जो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमने क्रिएट किया था उसको हम जो ना वो यूज़ करेंगे और जो डेबियन फ्रंट एंड का मोड है वो नॉन इंटरेक्टिव सेट कर देंगे और फिर रिपॉजिटरीज को अपडेट करेंगे और कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे और फिर कुछ स्क्रिप्ट्स और उसकी परमिशंस जो ना सेट करेंगे। इसके अलावा हम एंट्री पॉइंट और इन स्क्रिप्ट्स को रन करने का वो तरीकाकार भी डिफ़ाइन करेंगे। तो इस मकसद के लिए मैं जो ना वो डॉकर फाइल को ओपन कर लेता हूँ। डॉकर फाइल को राइट करने के लिए मैं अपने टेक्स्ट एडिटर में जाता हूँ। ये इसको हम ओपन कर लेते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर में इस फाइल को और फिर इसको जो ना हम इसको इसका राइट अप का प्रोसेस जो ना वो स्टार्ट करते हैं। राइट अप के प्रोसेस में चूँकि हमने पहले बेस इमेज फैच करना है, तो बेस इमेज को फैच करने के लिए हम फ्रॉम की कमांड यूज़ करते हैं। फ्रॉम हमारी रिपॉजिटरी जो है ना वो sna डॉट बेस सर्विस है और फिर हम इसका जो जो इन्वायरमेंटल वेरिएबल है डेबियन फ्रंट एंड के लिए वो स्पेसिफाई कर देते हैं। फ्रंट एंड डेबियन फ्रंट एंड इसको हम नॉन इंटरेक्टिव सेट कर देते हैं। इंटरेक्टिव और इसके बाद फिर हम रिपॉजिटरीज को अपडेट करते हैं एक कमांड के ज़रिए से apt अपडेट दैट्स फाइन। और इसके बाद जो हमने पैकेजेस जो ना वो इंस्टॉल करने हैं उनको इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा MariaDB सर्वर MariaDB क्लाइंट है, हम सिर्फ MariaDB सर्वर ही जो ना वो इंस्टॉल करते हैं। तो apt के ज़रिए से ही हम इसको इंस्टॉल करेंगे। वाई फ्लैग को यूज़ कर लेते हैं ताकि जो भी डिपेंडेंसीज जो डिफ़ॉल्ट सेटअप्स हैं वो हम यूज़ कर सकें, क्योंकि मोड जो ना वो नॉन इंटरेक्टिव है। तो MariaDB का पैकेज हम इंस्टॉल करते हैं पहले और उसके बाद फिर हम जो ना सूडो का भी हमें फ़िलहाल जो ना वो ज़रूरत नहीं है। हम LSB रिलीज़ का जो ना पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी फाइल्स या स्क्रिप्ट्स हो सकती हैं जिसमें कुछ हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्जन या फिर उसका कोड बेस वगैरह को फैच करना पड़े। तो इस मकसद के लिए हम जो ना वो LSB रिलीज़ को जो ना के पैकेज को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। इस मकसद के लिए APD को यूज़ करते हुए LSB का जो ना वो पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं, LSB रिलीज़। और फिर उसके साथ ही हम एक स्क्रिप्ट फाइल जो है वो क्रिएट करेंगे और उस फाइल को हम पहले स्पेसिफाई कर देते हैं कि हम इसको कॉपी करना है। इस मकसद के लिए MariaDB और start डॉट sh का स्क्रिप्ट करते हैं और इसको हम कॉपी कर देते हैं MariaDB start डॉट sh के ऊपर। ये हमारा रूट डायरेक्टरी के अंदर ही होगा। फिर हम इसकी परमिशंस जो ना वो उसमें एग्जीक्यूटेबिलिटी जो ना वो डाल देते हैं। इस मकसद के लिए chmod की कमांड है और हम +x कर देते हैं और हमारी जो फाइल होगी वो MariaDB start डॉट sh होगी। तो ये करने के बाद ये है कि हम इसकी पोर्ट हमें जो है वो एक्सपोज करनी पड़ेगी। हमें पता है कि MariaDB जो है वो MySQL का जो है वो क्लोन है, तो इट रन्स ऑन पोर्ट 3306। इसको हम एक्सपोज कर देते हैं और इसके बाद हम एंट्री पॉइंट जो है वो डिफाइन करते हैं। क्योंकि हम ऑलरेडी systemd को जो है वो यूज़ कर रहे हैं। आमतौर पे systemd को यानी कि जब हम रियल इन्वायरमेंट पे यूज़ कर रहे हो तो उसको फिर हम यूजली इंस्टॉल नहीं करते। चूँकि हम ये लर्निंग पर्पज़ के लिए, डेमोंस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसको systemd के साथ जो है वो प्रिविलेज्ड मोड में जो है वो रन कर रहे हैं। systemd
/systemd की जो एग्जीक्यूटेबल जो है ये हम ऐड कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा स्क्रिप्ट है उसको हम रन कर देते हैं कि जैसे ही जो ना वो हमारा कंटेनर रन करे तो ये जो ना वो MariaDB स्टार्ट का जो स्क्रिप्ट है वो रन हो जाए। इसको मैं अब सेव कर लेता हूँ। और अब ये है कि जो हमने बात की है कि जो स्क्रिप्ट हमने MariaDB का जो ना वो क्रिएट किया है इस नाम से हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे। इसको इसका नाम चेंज कर देते हैं और इसमें देख लेते हैं कि हम बेसिकली हम इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे। बस ये है कि इनिशियली जो ना वो MariaDB की जो ना वो वर्जन जो ना वो डिस्प्ले कर देगा। इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं और इसके बाद फिर systemctl को यूज़ करते हुए हम पहले MariaDB की सर्वर्स को स्टार्ट करते हैं और फिर इसको अनेबल भी कर देते हैं। अनेबल MariaDB और इसको फिर रीस्टार्ट कर लेते हैं ताकि हमारे जो ना वो ऑपरेशन जो ना वो वेरीफाई हो सके। रीस्टार्ट MariaDB. Okay, so that's all. We can also print one message on the startup echo कि हमारा MariaDB database service is starting. Database service is starting up. तो दैट्स ऑल। हमारे पास जो ना वो इसकी जो ना वो MariaDB की जो ना वो इमेज फाइल भी हमने राइट कर दी है और ये जो फ्रंट एंड का मोड है वो भी हमने इंटरेक्टिव जो ना वो स्पेसिफाई कर दिया है। अब हम इसको जो ना वो बिल्ड करते हैं। तो इसको बिल्ड करने के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेते हैं अपनी उसी फोल्डर के अंदर जहाँ पे हमारा डेटाबेस की इसमें डॉकर फाइल जो ना वो मौजूद है। यहाँ पे हम जो ना वो कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया और डॉकर बिल्ड की कमांड को यूज़ करते हुए हम इसको बिल्ड कर लेते हैं। डॉकर बिल्ड और टैग हम स्पेसिफाई कर देते हैं SMA.MariaDB और इसके बाद जो फाइल नेम है वो होगा बेसिकली हमारा जो हमारी इसकी जो हमने नाम स्पेसिफाई किया था MariaDB.txt का जो कि हमारी बेसिकली जो ना वो डॉकर फाइल है और ये करंट डायरेक्टरी में है। तो इसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो entry point. Okay, so we have some spelling mistakes here. Let me write this again. Entry point. Okay, now it is okay. Even it is still not okay, we need to do entry point. So that's all. इसके बाद हम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं तो ये इमेज जो ना वो बिल्ड हो जाएगा। Okay, there is some error. I think there is we need to get the MariaDB server. Let me say MariaDB server and let's rerun this command. Okay, so it's just fetching the all the files MariaDB server and it is now it has been built. That's done. So next to this one basically what we want to do is the Apache server. We need to set up the Apache server and install phpMyAdmin. For this purpose we will follow the same process. We have created a directory basically. If I go there, so here if I go, this is the database and this is our PMA. This is the directory that we will be basically using. तो अब जो अपाची का सर्वर जो है ना वो उसको बिल्ड करने के लिए जो ना वो जो डिफरेंट किस्म के कमांड्स हैं, जो डिफरेंट किस्म के पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं और उनको हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। एज वी हैव डन बिफोर, हम पहले बेस इमेज जो ना वो फैच करते हैं अपनी SNA की जो ना वो रजिस्ट्री से। सो बेसिस और इन्वायरमेंट वेरिएबल जो हमारा डेबिन फ्रंट एंड का है उसको हम सेट कर देते हैं
Debian फ्रंट एंड, इसको हम नॉन इंटरेक्टिव सेट कर देते हैं, नॉन इंटरेक्टिव। और इसके बाद ये है कि हम रिपोजिटरीज को अपडेट करते हैं। इस मकसद के लिए apt अपडेट को यूज़ करते हैं। ओके, सो दैट्स रन। अब यह है कि हम अपाची 2 को इंस्टॉल तो कर सकते हैं, लेकिन ये है कि PHP 8.2 जो है ना, वो आमतौर पे जो डिफ़ॉल्ट रिपोजिटरीज़ हैं उसमें से उसमें अवेलेबल नहीं होती है। तो हमें इसके लिए एक नई रिपोजिटरी ऐड करनी पड़ेगी। उस रिपोजिटरी के लिए भी हमें सॉफ्टवेयर प्रॉपर्टीज़ कॉमन का जो है ना वो पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसलिए हम पहले सॉफ्टवेयर कॉमन प्रॉपर्टीज़ का जो पैकेज इंस्टॉल करते हैं, फिर उसके बाद रिपोजिटरी को ऐड करने के बाद हम दोबारा से लिस्ट को अपडेट कर लेंगे। तो आइए सर इसको इंस्टॉल करते हैं, रन apt इंस्टॉल सॉफ्टवेयर properties common. This is the package that is required. Then we add run a command, add apt repository. Okay, so the repository name is basically the PPA, OneDrive and PHP. इसको ऐड करने के बाद हम दोबारा से हमें रिपोजिटरीज को अपडेट करना पड़ेगा, ताकि जो नए सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं वो हमें जो उसकी लिस्ट जो है वो भी मिल जाए। तो दैट्स डन। इसके बाद हम ऐसा करेंगे कि ये जो पैकेजेस हैं इनको इंस्टॉल करेंगे हम। जो ना इनको वन बाय वन भी इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर कमांड्स को कंबाइन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए इंस्टॉल करते हैं अपाची। इंस्टॉल y and Apache 2, और इसके साथ ही हम उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं, apt install y php 8.2. That's fine. After this one, we need to install the different extensions, for example, the MySQL, GD, XML, internationalization, and the curl, SOAP, and some other packages that we have listed that are shown on the shown on the screen. So for this purpose, let's run the command, run apt install y and php php 8.2 and MySQLi. This is required for to access the MySQL server, MariaDB server from the PHP, and similarly the PHP 8.2 GD package, and we also install the PHP 8.2 XML package, and we also install the PHP MB string, PHP 8.2 MB string. Okay, and then curl will be also installed for the PHP 8.2 PHP 8.2 curl, and we also install the zip package, PHP 8.2 and zip, and also for the international languages we also install the package PHP 8.2 intl, and then we will install SOAP also, PHP 8.2 SOAP, and BC Math also. So PHP 8.2 BC Math, and then is the JSON is usually installed by default. It comes with the PHP 8.2 package, so we will not specifically install it here. After these extensions, there are some other packages that needs to be installed. For example, these are wget and unsafe libpng and libpng and jpeg.
these are the imaging the packages for that will be used with the PHP. So let's install these packages wget and unzip and libpng, now development, libjpeg and development version. And we also install the libfree type also, libfree type 6 डेवलपर वर्जन हम इंस्टॉल कर लेते हैं, और उसके बाद लिपसिप जो है ना वो उसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं, लिपसिप डेवलपमेंट वर्जन. और लास्टली lib icu dot developer and curl, finally curl will be installed. So these are the basically the packages that are required to work with the PHP and MySQL. After this, we save this Docker file, and we see that we have to download the phpMyAdmin and then extract it to the web folder, which is www/html, and we will just extract the top level components level is equal to 1, and then we will also remove the zip file that we have downloaded. After that one, we will set the permissions for this file. So let's do that one. For this purpose, let me just reset this screen. So I will run the command wget, and it should be quiet. I mean, we cannot interact, of course. And then the link that we have for the our PHP 5.2 phpMyAdmin. So this is a phpMyAdmin.net, and then is the phpMyAdmin version is 5.2.1. then the file name is phpMyAdmin, and its version is 5.2.1. that's all languages. This is basically the link that you need to type exactly as it is, tar and gz. These files are basically available on the internet. You can also browse and check the whether you have typed the correct URL or not. After this one, once you have specified the this URL, it will download into the current working directory the phpMyAdmin 5.2.1 all languages tar.gz compressed file. So we don't need to extract this basically the compressed file. XY is we'll use the flags xvzf, and then we'll specify the phpMyAdmin which was the basically the file name dash. Let me just copy from here. Okay, I will copy from here, and we then need to specify the target where it has to be downloaded, and it is the www folder that we where we will need to extract these all the files into the HTML directory. And then we also mention another flag, which is the strip components, and we will specify the level is equal to 1. So that's all. Now we can once the files is extracted, we can just remove it from the current working directory. For this purpose, I will run the command run rm-rf, which will be basically by force, and the same file name that we have specified before. So that's done. Now we need to because we have copied the new contents into the root www root,
So we need to change the ownership of those old files that we have copied before. For this purpose, I will run a command chown, and it will be recursively run on the all directories. The owner will be www.data, and group will be also www.data. Sorry, www.data, and this is also www.data. And then the location is basically that we have specified before for the extraction. This is variable www and the HTML file. So that's done. After setting this, changing the ownership, we need to know move to the nav to enable some modules and add some default configuration, some changes to the default configuration. For this purpose, I will go back to my the Docker file, and here what we have to do is basically enable these modules, rewrite headers and SSL, and also we will not disable the default configuration, because we will just copy the change the configurations that we have already there, or even the default configuration will have these some existing some configuration. We'll just replace the contents that are already there. So for this purpose, we will run some commands. First one is the will enable the modules with the A2E enable mode. A2 enable mode. This is provided by the Apache 2, basically the package, and we also enable the A2 enable mode and headers. We also run install the A2 enable the SSL module also, and that's all. We will not disable the default side, because we will just basically write the contents into the default directory, so that if we access the Apache server, the default website will be the our PHP MyAdmin. Actually, this is a service that we need to basically serve. So before changing the default configuration, I will just copy the default configuration as a backup. So for this purpose, I will use the copy command, and will specify the path. It should be the etc and Apache 2. Then is the sites available, and then we will have this default configuration, default.conf, and I will just copy it to the next one, or I will append the backup at the end of the name. So that's done. After this one, basically we need to add some configuration to this new file. For this purpose, we have shown this the default configuration. We have shown the configuration for the PHP MyAdmin on the screen. We just need to add this configuration in the our default the default website configuration. For this purpose, I will use the basically the echo command, and then we will append it to the above default configuration. So तो आइए अब हम इसको करते हैं, run echo. So what I'm doing here, I will start this this string, and then copy the contents here, virtual host, and it will be running on port 80 on all the basically the all the IP addresses available. After then, I will just move to the new line, and then I need to specify basically the document root. So for document root,
Okay, new line, just the new line for here. Okay, and then I will just add a new line. We'll add a tab because it should be structured in, I think that will make sense when we are changing it. That's done. Okay, so this is what we are basically printing on this screen. We will need to send it to the sites available configuration that we have already written here. I will just copy from here. So that's fine. बुनियादी तौर पे जो हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, ये बुनियादी तौर पे जो हमारी डिफ़ॉल्ट साइट की कॉन्फ़िगरेशन है उससे रिप्लेस हो जाएंगी। अब ये है कि अपाची की कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम हमारी जो डिफ़ॉल्ट साइट है, क्योंकि हम PHP में हमारे एडमिन को नहीं यूज़ कर रहे बल्कि इसको ये यूज़ कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट को, इसको अनेबल करने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी अनेबल्ड होती है बाय डिफ़ॉल्ट। हम जो ना वो PHP की कॉन्फ़िगरेशंस को जो ना वो चेंज कर लेते हैं। इस मकसद के लिए हमें ये जो गिवन पैरामीटर्स हैं इसको हम अपेंड कर देंगे अपने 99 एक PHP की कॉन्फ़िगरेशन में। Okay, now this information needs to be added to the file which is located on the etc php, I mean where our PHP installation has been done. यानी कि ये हमारी अब ये पैरामीटर्स हमने PHP की कॉन्फ़िगरेशन में बेसिकली ऐड किए हैं, जो कि 99.custom.ini से है। ये सबसे आखिर में एग्जीक्यूट होंगे और इन पैरामीटर्स को चेंज कर देंगे। इसके बाद हम जो ना वो नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास ये कि हम पोर्ट 80 हमने जो ना वो एक्सपोज करनी है और फिर हम हमारे जो स्टार्टअप की स्क्रिप्ट हैं उनको जो ना वो ऐड करते हैं और उनकी परमिशन सेट करते हैं, एंट्री पॉइंट डिफाइन करते हैं, फिर जो कमांड जो होगी वो स्टार्टअप के लिए उसको स्पेसिफाई कर देते हैं। इस मकसद के लिए हम पोर्ट एक्सपोज करने के लिए हम एक्सपोज का कंस्ट्रक्ट यूज़ करते हैं, पोर्ट 80 एंड जो हमारा स्क्रिप्ट होगा उसका नाम PMA स्टार्ट हमने रखा हुआ है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं PMA स्टार्ट .sh and it will be copied to the root directory. इसकी परमिशंस भी सेट कर देते हैं, chmod PMA start.sh. That's fine. आफ्टर दिस वन अब हम इसका जो ना वो एंट्री पॉइंट डिफाइन कर देते हैं ताकि हमारा कंटेनर जो ना वो ऐसे एग्जीक्यूटेबल बन सके। इस मकसद के लिए हमारे पास जो कंस्ट्रक्ट अवेलेबल है वो एंट्री पॉइंट का है और दिस सिस्टम D इज़ आवर टारगेट एंट्री पॉइंट, तो इसी को हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं, system D and system D. Okay, after then the script that we have copied, I will just run it, specify to run it basically when the container start. So PMA start.sh. So that's all. This is the basically the all configuration that we have specified
I mean, if you see, the process was very simple. I mean, you need to. I mean, whatever the image that you need to build for any specific service, आपको उसकी requirements, कौन से packages हैं, कौन सी dependencies हैं, क्या चीज़ें available होनी चाहिए, कौन से parameters सेट करने हैं, ये आपको पहले से पता होने चाहिए. जब तक आप सर्विस की आपको आपके पास सर्विस की डिस्क्रिप्शन नहीं होगी, आप उसका इमेज जो ना वो क्रिएट नहीं कर सकते हैं. तो इसलिए अगर आप किसी भी सर्विस के लिए या किसी भी पैकेज को आप रन करना चाह रहे हैं, तो उसको डिटेल से स्टडी करें, उसकी रिक्वायरमेंट्स अंडरस्टैंड करें, और फिर उसकी डिपेंडेंसीज को अंडरस्टैंड करें, और फिर जो उसी के मुताबिक जो ना वो आप अपना जो ना वो इमेज बिल्ड करें. ये हमने इसी तरह से जो ना इसी प्रोसेस को फॉलो किया है. कुछ अगर आपने पहले पीएचपी किया, अगर आपने पहले अपाची की कॉन्फ़िगरेशन नहीं की, या आपने कभी पीएचपी पहले यूज़ नहीं की है, तो ये फिर उस सूरत में काफ़ी सारे इश्यूज़ हो सकते हैं. लेकिन उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है. आप पीएचपी जो पैकेज आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, उसकी वेबसाइट पे चले जाएँ, उसकी रिक्वायरमेंट्स देख लें, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस को देख लें, और एक अकॉर्डिंगली फिर आप अपनी इमेज फ़ाइल जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं. So that's done. I will just move to the next point. Next point is the NGINX, basically the reverse proxy. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बेसिकली हम जो ना वो अपाची सर्वर और डेटाबेस सर्वर जो ना वो दोनों प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर हैं, और इनकी सर्विसेज को हम NGINX के ज़रिए से एक्सपोज करेंगे. अब NGINX को हमें एज ए रिवर्स प्रॉक्सी जो ना वो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, और इस मकसद के लिए हम फिर जो ना NGINX का भी इमेज जो ना वो राइट कर लेते हैं. तो हमारा प्रोसेस जो ना वो सिंपल होगा. हम बेसिकली अपना जो बेस इमेज है वो उसको फैच करेंगे, और फिर कुछ पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे, जिसमें NGINX है, कर्ल है, और CS सर्टिफिकेट्स हैं. उसके बाद पोर्ट भी हम जो ना एक्सपोज कर देंगे हमारी 80 की. और इसके अलावा जो है ये है कि NGINX की कॉन्फ़िगरेशन जो ना वो हमें चेंज करनी पड़ेगी. इसका एक तो तरीका ये है कि आप NGINX की जो ना वो एक nginx.config जो है ना वो एक फ़ाइल क्रिएट कर लें, और उसको कॉपी कर दें अपने इट्सी nginx/nginx.conf फाइल के साथ. और उसके बाद फिर हम जो ना वो जो एंट्री पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे, और जो हमने जो ना वो स्क्रिप्ट रन करना है, उसको हम जो ना ऐड कर देंगे. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने NGINX का एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है. ओके, तो हम इस NGINX के लिए जो ना वो इमेज जनरेट कर लेते हैं, जैसे हमने पहले जो ना वो प्रोसेस यूज़ किया है. आई थिंक इट शुड बी वेरी सिंपल. फ्रॉम we will first use our base image, which is basically the base sys, and then we specify the environment variable Debian frontend, and we'll set it to non-interactive. Okay, so after this one we just need to update the repositories before installing any packages. So let me just run this command apt update, and then we install the packages that we need to that are required. For this purpose I will use the y flag, so that all the dependencies should be automatically installed, and then NGINX server. Then I will install also the curl, and finally I will install the CS certificate package. Apt install then y and cm certificates okay. So that's okay. That has been done. All the packages are already installed. So we expose the port also, which is 80, and then we copy the startup script. So for this purpose I will run the copy the command first, copy the file nginx start.sh, and we'll copy it to the root as we are doing with the other images. And we set the permissions chmod and +x, and our file location is in the root directory, the start nginx. After this one
We also copied the NGINX configuration also. For this purpose, I will just copy this command here, and we have to create a NGINX configuration conf file, and copy it to the basically etc nginx and nginx.conf. So what it will do, whatever the configuration that has been defined by the nginx package and nginx package, it will be replaced with the with the specific file from our host system. इसके बाद हम जो है ना वो सिमिलरली जैसे हमने पहले इमेजेस के साथ किया, एंट्री पॉइंट जो है ना वो डिफाइन कर देते हैं. एंट्री पॉइंट आवर विल बी द सिस्टम डी. So let me just do it. Lib and system D and system D executable, and after that one just we run the command, this script that we have copied. I will just copy from here, so from here, and that's all. So that's done. I mean, this is the all configurations that we needed to do for NGINX proxy. And if I go to the NGINX configuration, so basically in the NGINX configuration, we have some default configuration parameters that must be there. There should be events tag, and then there should be HTTP, and under the HTTP there should be a server tag, and where the location is basically specified. This information we can also change after logging in via SSH. And I think we will do it later on when we compose the services. If our service is not accessible, we will just check it, and we'll replace it. For the nginx start script, if I go there, I have just I have just mentioned these commands, which is basically just starting and enabling printing a message that an nginx service is starting, and then starting the servers, then enabling it, and then restarting it. That's all that we needed to do for this purpose.